Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so open R12 chart and 3 batches already there, 1 to 25, 26 to 50 and 51 onwards. You have your readings. So let us start. Let us cross check the COP values, theoretical. So anyone can share the screen with the chart and your readings so that we can proceed further. Anyone from any group? Yeah, anyways, that is a sample one. He head of the department, office मध्ये. तिन्ही. एक मिनिट हा, ओंकार. तीन कोटेशन आले. हा, तो माणूस आता घेऊन गेलाय. नाही तो अमितकडे देईल. ते अमितला विचारायचं याच्या पुढे काय करायचं, कारण ते ओपन करायला पाहिजे ना, प्रोसिजर काय विचारा. Yes, hello, anyone has to share the screen and tell the reading so that we can discuss how to plot. That is your part, not part. Yes, sir. Yes, sir. I am doing. So from group 3, third group. Any group, any student. Anyways, it's a sample. Others can follow the same procedure. Why so much time just to share the screen? Okay. Load the chart first and tell the reading. Can you, okay, rotate, exactly. So fine, this is R12, okay. So now what is your condenser pressure? What is the evaporator? So our condenser pressure was around 0.44. So somewhere here. 0.44. Okay. Yes, sir. Just a second, sir. I'll get my readings. Yes, sir. 0.446. So somewhere around here. Why so? Sir, 0.4. So this is 0.6. So this should be 0.5. And that is 0.5. That is okay. But is this correct? Sir, we have to get a printout and do it on. The printout ले लो. मैंने उसी दिन वही बोला था. You have to be ready because you have to attach it in your submission. That's why I have not yet क्या बोल सकते उसको, circulated it on the group. The moment I circulate, I have to give some deadline. You have to submit it back. So you have to have this chart, hard copy with you. 1 minute. Yes, sir. कुणाला बोगला विचारायला मग ठीक आहे. मग लेक्चर झालं ना, नाही हे लेक्चर संपलं ना की मग आपणच विचारू की कोटेशन आली, आम्हाला ती आज ओपन करून हवी, लगेच कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट बनवायची. तिला 3 माणसं लागतात, अकाउंट्स ऑफिस मधलं कोणीतरी, स्टोअर्स मधलं कोणीतरी आणि मी स्वतः किंवा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. मग ते साईन करणार की कुठलं काय आहे, बरोबर आहे वगैरे वगैरे.
ओके लेक्चर झालं की मग करूया. हाँ, yes. So sir, I didn't get the printout, but I solved it using the tables. Fine, whether you use the table or the printout or whatever, that is just like the change in the method. But is that correct one? Is the Yes. method correct? I followed the method which you had taught in the numerical. Huh. I made some assumptions that is our first point is a saturated vapor and third point is a saturated liquid. अरे बाबा वो सब बाद में. Is हाँ. it correct to draw a line as 0.44 whatever directly over here? Or what is the evaporator pressure? 0.1 कुछ तो. 1.48 sir. है? अरे वो कंडेंसर होगा. Sorry, condenser 1.48, evaporator pressure 0.446. हाँ. अगर 0.4 कंडेंसर बोलोगे तो evaporator has to be 0.1 lesser than that. Yes sir. Greater than. Yes sir. हाँ. तो हाँ. सही है ना सर, सीधा स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट करेंगे ना सर, हॉरिजॉन्टल लाइन. How many from the class do agree with this? Agree with what? Huh? Agree with what? Agree with what it's saying. Draw a horizontal line corresponding to whatever that pressure. Anyone wants to say anything? Or like everyone? Here I can see 64 people. Sir, the उसमें से एक मैं 63. 0.4 to 0.6 might not be equidistant, so we can't really spot 0.44 directly. Equidistant? What is that? As in, sir, the distance between 0.4 to 0.6, so like 0.41, 0.42, for example, Yes. Huh. will not be equidistant, right? Correct. Whether to draw a line corresponding to whatever that reading is this the correct method? Can you draw it directly? 63 people. So if we take it to scale, like suppose divided into equal number of parts, and then we can draw a line. Arey Baba, I'm not talking about that. That is the second part. First part. Are you going to draw the line directly corresponding to 0.44, whatever it is? Distance बाद में, wherever that point may fall. Can you draw it directly? Yes sir, what other pressure? We don't have any other pressure, right? So other pressure means? Matlab sir, either we should have temperatures so that we can draw it corresponding lines, but we don't. That is a technical part. That is a technical part. I am asking the basic question. Is it fine to draw a horizontal line directly? Yes, sir. Yes, All sir. 63 agree. Yes, CR ने बोल दिया मतलब everyone agree. That means you have not seen the video properly. Sir, units are also right, sir. We have our pressure in megapascal. Units I have converted. Before giving you the pressure like PSI, I converted into MPI. Yes, sir. So it is right, na? Why? You have not seen the video. None of you. 63 people agree. CR ने बोल दिया मतलब agree. You have not seen the video properly. I have shown you the video, specifically selected videos. Who is going to add the atmospheric pressure? What you have got is the gauge pressure. Oh. Oh. Yes. You have to add 0.1. Okay, sir. Correct? 1.01325 bar is 0.101325 MPa. You have to add it. Yes. So are you getting it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Other 63 people, not Hemant alone or CR alone. Other people, are you getting it? Yes, sir.
What we Yes, have sir. done Yes, there, measured, is the gauge pressure. We have to convert it to the absolute one, correct? The chart is the absolute one. It's not gauge. Yes, sir. अगर मैंने न्यूमेरिकल में सिर्फ वहां पे लिख दिया गेज और आपने उस पे चार्ट प्लॉट करके मुझे रीडिंग दे दिए आंसर सॉल्यूशन एमएसटी एसटी व्हाटएवर सर वो गेज वर्ड दिखा तो याद आ जाता है सर, वो गेज वर्ड नहीं दिखाना तो। पर हमने एक्सपेरिमेंट में तो किया ना आई हैव शोन यू द प्रेशर गेजेस आल्सो यस सर, हाँ वो प्रेशर गेजेस है, हाँ तो हाँ सर मिस हो गया सर। so how much it is now? Tell me the condenser pressure and evaporator pressure after adding 0.101325. Sir, condenser, sorry, evaporator pressure is 0.547. 547 ठीक है Yes, sir. And condenser pressure is 1.58. 1.58 ठीक है so now what you have to do, how will you plot it exactly? So, as Arnav said, we'll mark, like, measure the distance and take the ratio of. Distance let's say 0.121 हाँ distance मिल गया फिर हाँ सर, so 0.121 हमें डिस्टेंस मिल गया, और ये डिस्टेंस कितने मेगा पास्कल के प्रेशर पे है वो भी तो पता है। चलता है 0.1 0.2 0.4 हाँ, so sir, which scale is this? It's not a linear one as CR said. yes sir. So which scale is this? Logarithmic scale होगा सर। Logarithmic. So apply logarithmic scale. Yes sir. So what is your value? 0.54 something. Yes sir, 0.547. हाँ तो ये आएगा किसमें 0.4 और 0.6 के बीच में करेक्ट? Yes sir. हाँ तो log of 0.4 नहीं higher कौन है 0.6 log of 0.6 minus log of 0.4 corresponds to whatever distance. Then log of 0.547 minus log of 0.4 is equal to how much distance? Yes. Simple ratio. Yes sir. And then you have to move that distance with respect to 0.4 in the upward direction. Yes sir. Are you getting it? It's a logarithmic scale. It's not a linear one. Yes, So sir. the ratio has to be taken in log scale. So log 0.6 minus log 0.4 corresponds to, let's say, 1 centimeter. Then log 0.547 minus log 0.4 corresponds to how much? Let's say it comes as 0.7 centimeter. Okay, 1 centimeter का कम ही होगा 0.7 centimeter, 7 mm. So you have to move 7 mm in the upward direction from 0.4 because your reference is 0.4. Same is applicable for the condenser pressure. Are you getting it? Yes sir. Other batches, Yes, sir. Yes, sir. your readings. Yes, sir. So what is your condenser value, Hemant? 1.58 sir. 1.58. Okay, so that falls between 1 and 2 directly. So log 2 minus Yes. log 1. Yes. और ये log natural है. Of course, आप कोई भी लो चलता है because anyways it is ratio, so getting cancelled. So ln2 minus ln1, let's say corresponds to 2 centimeter. Then ln of 1.58 minus ln1 corresponds to how much? तो मिल जाएगा. And move in the upward direction with reference to 1. Yes sir. This is how you do the logarithmic interpolation. Linear interpolation सबको आता है. Yes sir. This is the same thing which you have to follow in your theory numericals also. The numericals which we have solved in the theory lecture till now are related to the temperature. So I taught you how to read the temperature in between. Correct? 40 degree and 60 degree, how to find 50 degree. That is okay. Because that is a linear scale. But pressure is not a linear scale. It is a logarithmic scale. So I have taught you the logarithmic interpolation also. We read when you get the numerical in your paper, MST, ST, जो भी होगा. If I give in terms of temperature, it's a relatively simple task. If I give you in terms of the pressure, then you have to go for the logarithmic interpolation. Yes sir. Anybody from the entire class not clear?
कि क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कोई है तो बोल दो, नथिंग टू बी शाय अबाउट। सब लोग लाइफ में पहली बार ही कर रहे हैं, नोबडी इज रिपीटर ओवर हियर। If anyone is still not clear, I will explain it again. That is my job, that is my duty. सर वो लॉगरिथमिक स्केल का एक बार रिपीट कर दो। आपका रीडिंग बोलो। सर कंडेंसर प्रेशर 1.54 और इवेपोरेटर 1.54, हाँ ठीक है। अभी 1.54 इसमें कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। हाँ। बराबर। अब कैसे फॉलो करोगे? ये लॉगरिथमिक स्केल है, लीनियर है नहीं, तो डायरेक्ट रेशियो नहीं लोगे। मतलब 2 - 1 corresponds to 2 सेंटीमीटर, तो 1.54 - 1 ऐसा नहीं, इट इज अ लॉग स्केल। सो इट इज log 2 - log 1 corresponds to whatever the distance. Then log of your reading 1.54 minus log 1 corresponds to how much? आप लॉगरिथमिक स्केल में ऊपर बढ़ोगे ना, लीनियर स्केल में नहीं बढ़ोगे। तो log 2 minus log 1, ये जो भी होगा value, that is corresponding to that particular distance on the graph. So similarly log of 1.54 minus log 1, ये जो भी आंसर आएगा corresponding to how much? That is your ratio. But this is not a linear one, this is a logarithmic one. Interpolation है but linear नहीं, logarithmic है। Okay. And then वो जो distance मिलेगा that will corresponds to 1.54 on this scale, ये जो graph है उसमें, because your scale is logarithmic. Are you clear now or still doubt? Yes sir, got it. Yes sir. Otherwise I will repeat, no problem. Anyone else who wants to cross check what you have understood is correct or not? You can tell me your own reading and describe the process so that it can be confirmed whether you are on the right track or not. Anyone having the printout? Hemant is showing the PDF file only. Anyone is having the printout? Anyone got it? See, nobody has got the printout. Why? I told you in the last time. I've got the printout, but I've plotted using the actual values. Actual means? Yes, sir. Same. Like we took the printout, but we plotted using the gauge pressure. The values which you give for the pressure. तो रब करो ना उसको, पेंसिल से ही बना है ना, रब कर दो। सर वो बहुत सारा लाइंस था और पेंसिल विजिबल नहीं था, तो उसको पेन से तो डार्क कर दिया। We'll have to take a new print. अच्छा, मतलब फेयर कर दिया क्या उसको? हाँ सर। हेती anybody who is having like a fresh paper, आपका क्या होगा? सिर्फ वो लाइन थोड़ी सी ऊपर बढ़ेगी ना। Sir, I have it. Yes. Those who have plotted using the gauge pressure, the line will be shifted slightly upward because you are going to add for 0.101. Yes, sir, I have the paper, the printout. हाँ, तो then and you are having your readings also. So anyone Yes, having the fresh paper means not the PDF copy, printout जिसपे आप दिखा सकते हो लाइन प्लॉट करके, along with your readings. So you can share. सर बट अभी प्लॉट करना पड़ेगा ना उसे, पेपर कभी ना फ्रेश कभी तो करना ही पड़ेगा ना। तो सर अभी टाइम लगेगा तब तक का शेयर कर। हैं? सर प्लॉट करने में टाइम लगेगा ना सर। तो सबको ही करना है भाई वो। हाँ सर, आपने अभी शेयर करने बोला ना, मैं उस पर बोल रहा हूँ आपको। तो शेयर करके प्लॉट करो क्या, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं, पहले मुझे देखने तो दो जो आप प्रिंट लाए हो। अच्छा, प्रिंट ला, ओके ओके ठीक है, वो तो दिखाओ, दिखाता हूँ। ब्लैंक शीट दिखाओ।
हाँ एक मिनट। Sir, I'll stop present. हाँ. Anyone who is having the printout, blank मतलब not done with any reading. Sir, can you see the printout, sir? ये बहुत ही छोटा है, ठीक है. आप मोबाइल से दिखा रहे हो? हाँ सर, फोन से दिखा रहा हूँ. हाँ, ठीक है. So now what you have to do, stop sharing this, then you have to plot those two lines related to condenser and evaporator, okay? और उसके बाद स्क्रीन शेयर करो, वीडियो नहीं, स्क्रीन शेयर करो प्रॉपर्ली. उसके बाद आई विल टेल यू व्हाट टू डू. स्क्रीन शेयर करके सर दिखेगा थोड़ी सर वो प्लॉट. क्यों? यू कैन टेक द फोटो एंड शेयर द स्क्रीन. ओह ओके, बट ठीक है सर, ठीक है. And anyone who can do this exercise on the PDF, he or she also can do the same thing. What is the big deal? In PDF editor, there are options available, so you can do this thing on PDF itself. ओंकार पाईप फार पिडत बसती. बाईला फोन लावायचा. ठीक आहे, संध्याकाळी सरांचं लेक्चर सांगते, मध्ये मध्ये डिस्टर्ब नाही करायचं. काय निरोप असेल तर तेवढा फक्त घेऊन तुमच्या काय. हो मग ठीक आहे. हा. 9869759724. मायको इलेक्ट्रॉनिक्स तिथे इक्विपमेंट घ्यायचे त्याच्यासाठी. How many people are having the hard copy chart? Anyone can present. Plot the lines, take a photo and share. Sir, अच्छा, by the way, 1 तारीख से कॉलेज शुरू होने वाला है. So how many people are coming? I will show you the सर actual. ऑफिशियली कुछ नोटिस नहीं आया हम लोग को. वो तो आ जाएगा. गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जीआर सर एवरी बार बोलते आ जाएगा, बट सर आया नहीं. नहीं, कॉलेज की नोटिस तो बाय डिफॉल्ट आनी ही है. See, when government resolution gets passed, na, then college has no authority to change anything. सर बट आज 27 है हाँ, और सर 1 4 तारीख दिन ही की- बाकी है सर, अभी तक कैसा आएगा? तो क्या हुआ है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं, सर सर हमारा कॉलेज का प्रॉब्लम ये है ना सर, हॉस्टल में जगह नहीं है और सब हॉस्टल में चीजें. जगह नहीं रहता ना सर. तो लोकलाइट तो आ सकते हैं, हॉस्टलाइट नहीं आएंगे. इन द सर, जीआर इट इज ये वेरी कौन सा क्लियरली सर? मेंशन्ड. सर ये देख सर, मेरे को तो स्कैम कर दिया था सर विजेडिया ने. बोलता है ट्रेन जहाँ पे भी जाता है वहां से तुमको हॉस्टल नहीं मिलेगा करके. तो हाँ बराबर है, लोकल ट्रेन जहाँ तक है. सर मेरा अगर खत्म हो जाता है सर लोकल ट्रेन में जहाँ से आता हूँ, क्या खत्म? उसमें पनवेल के आगे ट्रेन नहीं जाती सर, मैं उधर रहता हूँ सर. आपका पोस्टल एड्रेस में क्या आता है? पनवेल आता है ना. हाँ तो बात खत्म. तो वही ना सर, अभी मेरे को फिर 1 घंटा 3 घंटा ज्यादा है सर दिन का ट्रैवलिंग में. तो मत करो. कॉलेज नहीं आओ सर मैं. हाँ, ऑनलाइन मोड में. ऑप्शन है अवेलेबल तो सर वेल एंड गुड है. मतलब Option is given by government. Government has to give that option.
If those who cannot manage to come and stay over here, they can be taught in the online mode, and localites who can travel, they can come as offline. So what about the exams? Which exams? ESC, MST. MST ESC सर उसका पता नहीं. 15 फरवरी तक जितने एग्जाम्स है वो कंपलसरी ऑनलाइन देने के लिए बोला है. उसके आगे का हो सकता है ऑफलाइन. सर पता चला बाद में बोल दिया जो ऑफलाइन लेक्चर है ऑफलाइन एग्जाम देगा ऐसा कुछ तो फिर वो मेरे को क्या पता भाई, मैं थोड़ी गवर्नमेंट में हूँ. नहीं सर गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी है सर वो कॉलेज के ऊपर है ना सर नहीं, अपने कॉलेज में कुछ भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन. सर लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था सर आज अपने कॉलेज का ऑफलाइन था बाकी सब कॉलेजेस का ऑनलाइन था सर एग्जाम ऑफलाइन कब था? तो ESC बीच में करने हुआ वाले था थे ना सर. वो तो सर हमने बोलने के बाद ऐसा हुआ बाद में नहीं, वो भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ही था. हम लोग अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते. डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगी, कॉलेज बंद पड़ जाएगा, नौकरी चली जाएगी. गवर्नमेंट ने बोला था कि यू हैव टू टेक द रिव्यू एंड शो अस हाउ मेनी पीपल कैन मैनेज टू कम. So that is why that notice was circulated. Then you people have given your consent. नो सर हम लोग कंसर्न पूछा ही नहीं था. सीधा बोल दिया कि आ जाओ कल से या एग्जाम के टाइम से जो भी. टाइम से आ जाओ मतलब कहाँ से आएंगे? जिनकी रहने की कोई सुविधा नहीं वो कहाँ से वही आएंगे? सर वही तो प्रॉब्लम था हम लोग का सर. वही कुछ नहीं बताया कुछ भी नहीं था बता खाली बोल दिया बस आ जाओ. कुछ प्रोटोकॉल कुछ नहीं दिया था क्या कैसे फॉलो होगा. बस बोला ये टाइम है एग्जाम का, आ जाओ बस. ऐसे कैसे नोटिस निकाली? नोटिस हैज टू बी इन द सेंस कि हाउ मेनी पीपल कैन मैनेज. देन मे बी सम काइंड ऑफ गूगल फॉर्म और समथिंग कि जिसमें हाउ मेनी पीपल कैन कम, हाउ मेनी पीपल एक कैन फॉर्म नॉट. आया था, बस पूछा था उसमें कि पहले किधर रहते थे, ऐसा मतलब कोविड के पहले घर पे रहते थे कि बाहर रूम लिया था या हॉस्टल में रहते थे, ऐसा बस एक फॉर्म उससे आया. क्या होगा? पता नहीं सर उससे उसका क्या क्या किया, उसका कुछ बताया नहीं. वो एक फॉर्म भरा था सबने और उसके बाद नोटिस आया कि ऐसा ऐसा है, आ जाओ. तो हॉस्टलाइट्स को बुला रहे थे और बाकी बच्चे पता नहीं क्या करेंगे. हाँ, क्योंकि हॉस्टल अगर चालू नहीं तो हॉस्टलाइज्ड लोग आएंगे कहाँ पे, रहेंगे कैसे, एग्जाम कैसे देंगे? 50% था सर ऊपर से तभी ऑपरेटिंग कैपेसिटी. और उसके अलावा भी अपने कॉलेज में बच्चे जो हॉस्टल के बाहर रहना पड़ता है, मतलब हॉस्टल की कैपेसिटी है ही नहीं उतनी कि सारे बच्चे रहे उधर जो दूर से आते हैं. वो तो है ही, बराबर है. रूम भी सब थोड़ी सर माटुंगा में रूम सर ऐसे थोड़ी कि मन हुआ मिलता है. नहीं, माटुंगा में ही लेना कंपलसरी नहीं है यार, दूसरी जगह पे लो, बट क्यों लो? वही अगर सर आपको एग्जैक्टली. और फिर कल वो वापस 1 महीने में बोल दिया घर जाओ, तो फिर हाँ वही ना, मतलब क्यों पैसे को वेस्ट क्यों करें? एंड स्पेसिफिकली फॉर योर क्लास, because this is your last semester, why you should pay for all 11 months? Yes sir. Yes sir exactly. Agreement. Yes sir. अब 11 month कोई रहेगा ही नहीं. You may be getting your यही सब क्योंकि फिर हमने कंसर्न्स दिए थे जब हाँ, वो सर, नोटिस वही। आया तो यही सब बोला था हमने कि ऐसा सब कैसे करें हम लोग करके. हाँ, थर्ड ईयर को अलाउड है, सेकंड ईयर को अलाउड है, they can come because anyways they have to stay for the next year. You people are getting pass out. अब थोड़ी रहने वाले हैं. ये 2-3 महीना हो गया, बस हो गया. तो सर फिर हमारा फिर खाली ऑनलाइन हम लोग खाली 50% देगा खाली हम लोग को फिर. I don't know, गवर्नमेंट जिस हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन देगी उसको फॉलो करके जो होगा सो. आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ कमिटी. लोकलाइट्स वाला तो भी हम लोग का ट्रैवल टाइम बहुत जाता है सर. वो जाने दो, कॉलेज चालू होता तो वैसे भी जाता ही है. एवरीवन हैज टू डू सम और द अदर वे सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट. बट आपका रहने का, आपका मतलब आउटसाइडर्स रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम. Nobody will be ready to pay unnecessarily ना. शायद फाइनल ईयर का फिर नहीं लेंगे एग्जाम ऑफलाइन, बाकी लोगों का लेंगे. हाँ सर ऐसा करे तो अच्छा रहेगा सर. तो आप लिख दो, जब नोटिस आएगी तो लिख दो मिनिस्टर को. हाँ सर कंसेंट पूछेगा तो लिखेगा सर. पूछेंगे क्यों? आपको लिखना है. सर नहीं पूछे सर. कंसेंट पूछते नहीं है ना सर, नोटिस आता है फिर पता चलता है हमें कि कंसेंट, अच्छा कंसेंट मांगना था इन्हें करके ऐसा. हाँ तो वही तो चाल है. सर ये Consent पूछेंगे, मीट वगैरह नोटिस आए तो दनादन बर्बाद कर देने का. मीट रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना सर. मैं अथर्वा गुफरान बात कर रहे हैं और मैं खुद बात कर रहा कौन हूँ. अथर्वा भाई, कौन अथर्वा? नहीं सर फुटेज का फिर हम लोग को बोलेंगे कल नहीं तो मैं खुद बात कर रहा हूँ ना कि आप ऐसा ऐसा करो. चलेगा.
If the faculty says why you are afraid, I am always with the students. मतलब उनको जो ठीक लगे वो करो, नहीं लगता तो नहीं करो ना, जबरदस्ती थोड़ी ना चाहिए. Yes, sir. अब वो NRI लोग रहेंगे यहाँ पे, why they should travel unnecessarily? यस सर, हाँ सर, वही सर. अब चलो प्रेशर लाइंस. सर वो मेरे को एक वो ग्राफ के पहले एक डाउट पूछना था सर. ये अगर हम टेबल, इन केस अगर मैं टेबल यूज कर रहा हूँ, तो जो सुपर हीटेड पार्ट है H2 वाला, उसके लिए मैं सीपी वो वाले प्रेशर पे सैचुरेटेड वेपर का सीपी यूज कर सकता हूँ ना? सैचुरेटेड का हाँ कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा फर्क नहीं आएगा ये. बहुत ज्यादा नहीं है. करेक्ट. ठीक है सर, दैट्स स्टिल एन अप्रोक्सीमेशन बट यू कैन यूज इट. चलेगा सर. ओके सर. जैसे ग्राफ में थोड़ी बहुत एरर आएगी, वैसे उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर आएगी, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग दैट सीपी कांस्टेंट. यस. बट लेट इट बी, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं. और सर आपने अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा बोला कि यूज मतलब यूज एशरे का चार्ट वगैरह, तो ऐसा कंपलसरी है क्या कि ग्राफ पे ही बनाना है करके? यस ऑफ कोर्स. मैं और मैं हमेशा वही करता हूँ, या तो मैं बोल देता हूँ कि ये सॉल्व विदाउट यूजिंग pH चार्ट और सॉल्व यूजिंग pH चार्ट. So everyone has to attach that ना as a proof that you have done it. अच्छा अच्छा, ओके सर. नहीं तो एक हेमंत बनाएगा, बाकी सब लोग कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट. मोबाइल से वो पास करने में कितना टाइम लगता है? ठीक है सर, समझा. अभी सेकंड ईयर का थर्मोडायनामिक्स लिया था, उसमें भी एवरीवन हैज टू इंडिविजुअली प्लॉट द वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर द स्टीम टरबाइन. वरना क्लास में एक बंदा बनाएगा, सबको व्हाट्सएप पे भेजेगा, बाकी सब लोग उसी का डाउनलोड करके बना देंगे. You can very easily find out by handwriting or the way you are drawing the diagram. उससे पता चल जाता है. That's why everyone has to do it individually. उसके मार्क्स होते हैं, स्टेप वाइज मार्क्स में. यस सर. और सर फिर आप पेपर के पहले ऐसा मेंशन करोगे क्या कौन से रेफ्रिजरेशन चार्ट्स चाहिए रहेंगे? क्यों, जरूरत क्या है? आपके पास पूरा का पूरा एशरे है. तो सर बट मैं अभी, जैसे मैंने कोई अभी आज के आपको प्रैक्टिकल जेरोक्स निकालने के लिए, जेरोक्स माने वो प्रिंट आउट. हाँ, तो मैंने आज की. 4-5 ये दे दूंगा, ये 4-5 रेडी रखो, इसमें से कोई एक आएगा. ओके 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 सर. स्टैंडर्ड होता है. R11 उसमें है नहीं, R12, R22, R134, देन कार्बन डाइऑक्साइड है 744, अमोनिया है 717. ये 4-5 रेडी रखने का क्वेश्चन उसमें से ही आएगा. चलेगा सर. ओके सर. वो मैं बाद में एक नोट लिख देता हूँ इसमें अपने थियरी ग्रुप में. चलेगा सर. ये लैब का क्लासरूम है, थियरी क्लासरूम में मैं बाद में बता दूँ. ओके सर. उसका एक एक कॉपी प्रिंट हमेशा तैयार रखो. वन सेट फॉर MST, वन सेट फॉर ESC. आई विल बी आस्किंग फ्रॉम विद इन दैट डोमेन. ओके सर. हाँ, कौन है भाई? गुफरान, सिद्धेश, इसका हो गया. हाँ सर, अभी हाँ प्लॉट सर, कर रहे हो, कर रहे हो. वो क्या बोलते हैं, मैं PDF में कन्वर्ट कर रहा हूँ. अरे PDF मत करो बाबा, जस्ट टेक द फोटो एंड शेयर. हाँ सर, एक मिनट. कन्वर्ट करने की अगर कोई जरूरत नहीं, वो सब बाद में, व्हेन यू आर सपोज्ड टू सबमिट इट, एट दैट टाइम यू डू इट. राइट नाउ इट इज जस्ट द डिस्कशन. आपको उसका टेक्निक समझ में आना इम्पोर्टेंट है. सबमिशन के टाइम पे करो PDF वगैरह. सर ये लॉग है कि लॉन है सर? बेस क्या पावर है? ये है ना सर, जो लॉगरिथमिक ये स्केल फर्क है नहीं सर. पड़ेगा ना, तू रेशियो कोई भी लेने ले वाला लो, है. रेशियो ही लेना है. अच्छा, हाँ, ऐसे भी कैंसिल टू द बेस 10 हो या टू द बेस E हो. राइट राइट. लो, आपकी तो अभी वहां से शुरुआत है, अभी प्लॉट करने के लिए बहुत टाइम है. नाउ यू आर टेकिंग. नहीं सर, मैं कर दे रहा था, लेकिन मैं पूछ रहा था, क्रॉस चेक कर रहा था. अच्छा, मतलब मुझे कितना आता है वो देख रहे थे.
नहीं सर, मैंने बराबर किया है। ये जल्दी करो ना, 1 बजने को आ गया। वी हैव टू फिनिश इट बिफोर 1:20। अभी तक मेरे को पूरा बाकी का आगे का प्रोसीजर बताने का है। Are you plotting only 2 lines or the entire cycle? सर एंटायर साइकिल सर। Entire अच्छा ठीक है, चलो गुड, थोड़ा टाइम बचेगा। I was expecting only 2 horizontal lines. क्या हुआ, जमे क्या नहीं? Neither Gufran showing anything nor Siddesh. सर एक मिनट ना, आप ए ऐसे आपको दिख रहा है नहीं, साइकिल? शेयर करो, शेयर द स्क्रीन। ऐसे वीडियो से सर नहीं फोन चाहिए। में सर स्क्रीन शेयर कैसे करूँ सर? क्यों? फोन है सर, मीटिंग में लैपटॉप ऑप्शन तो लैपटॉप आता नहीं है। है। एक मिनट सर। लैपटॉप की जरूरत नहीं पापा, यू कैन शेयर द स्क्रीन फ्रॉम मोबाइल ऑल्सो, कहीं से भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। हेलो सर, स्क्रीन Yes. शेयर किया है, दिख रहा है क्या? आई हैव शेयर द स्क्रीन स्क्रीन। शेयर किया हुआ दिख रहा है, हाँ सर, बट दिस वन। ग्राफ नहीं। हाँ, ओके फाइन, गुड। सो नाउ ओनली जूम दैट साइकिल पार्ट, बाकी सब जाने। So this is the हाँ, cycle fine. over here. Right. So now horizontal lines are drawn 1.54 and whatever 0.518. Okay, good. And then 3 to 4 is just a vertical line. So how did you draw about this 1 to 2 line? Sir, yeah, entropy would be same, right? So these are the curves for entropy, like S is Isentropy. constant. So I Yes. referred these curves, and basically there is a bit of distance over here, over in the point 1. Huh. So I took a corresponding distance over here also. So a bit minute How did 1 or you 2. take that? Sir, approx. Sir, like Approximately, we 1. had discussed this method in the theory lecture, last lecture. Were you there present in last lecture? Sir, ratio. हाँ, horizontal line, condenser pressure and evaporator pressure, you have to take the ratio. That is the exact point. Why Yeah. approximation required? सर वो इतना, सर इट इज टू मच स्मॉल, मतलब मींस इवन इफ वी टेक अ रेशियो द वैल्यू इज कमिंग लाइक दैट, मतलब बहुत। I agree with that, but we have to follow the technical method. So हाँ let's सर, say you राइट, यस locate point 1. Now that point 1 is Sir. falling between 2 isentropic lines, correct? So how Yes. much is the ratio for the condenser? No, sorry, evaporator pressure side. Same has to be maintained for the condenser pressure side. That is the exact point. Okay, sir. Okay, fine. So now let's say that this point is correct. Okay, point 2. Now this is my dry saturated compression cycle. Now you have to draw the wet compression cycle in the same chart. So that means your point 2 now will be on the dry saturated point. Saturation, yeah. So yeah, again do that isentropic curve wala exercise. Find out the ratio.
and it will Okay, be like starting somewhere in the wet zone, correct? yeah, so means my point, just a minute. My point 2 would be over here on this Yes. line, and my point 1 should be around Somewhere somewhere here inside the in dome. middle. Yes, somewhere Yes. inside the dome. Okay, Okay. now before doing that, trace the points on the x-axis and note down the enthalpies. So that will give you COP dry saturated. So 249, 380, and this one I have to do it again. हाँ, ये linear scale है, इसको linear interpolation आराम से हो जाएगा. Enthalpy is linear scale. Okay. Pressure is logarithmic. Okay, so all of you, once you draw the diagram, then trace the points projection on the x-axis and note down the enthalpies. Now, out of this, your 3 and 4 is not going to change. Anyways, it remains same. It's Yes. only 1, 2 as the dry saturated and 1, 2 for the wet. Those are going to change, and that will be responsible for changing the COP, correct? Yes, sir. So, So, Siddesh, you can stop sharing the screen, note down the Yes. enthalpy values, and then draw another line over there only, where point 2 will be only saturated. Okay. And let us find out point 1 in that case. Yes, sir. Stop presenting, correct. Bas. Now you complete that task and then again share. सर और ये दोनों साइकिल में थर्ड पॉइंट विल बी सैचुरेटेड लिक्विड ना? Yes, that is our assumption for this given cycle, that entire expansion process starts at the saturated liquid. We are not believing any subcooling or anything. Okay, okay, sir. Copper capillary, no? So that is responsible for the saturated liquid. Other people from other batches, not branches, sorry, batches. Are you able to do the similar things for your own readings? Anyone having any problem? Hello, sir. Yes. This third reading. I have drawn, but I am not sure if that value is correct. Means for pressure, we have in the pressure y-axis. Can you repeat that? Share the screen. You share the screen and tell your reading. Then I will do. Yes, it is. हवा में कैसे बात करूं? आप कुछ तो दिखाओ. Yes, it is. Okay. Yes, sir. This is it visible? Yes. So now what is your problem? Sir, the point was this condenser pressure was 1.54. By the log method, I have done this line. छोटू सा कैसे आ गया फिर? 1.54. Yes, sir. That only. Can you repeat how that log calculation? You tell me what you have followed. Let us find out the mistake. What did you do?
I have log 2 minus log 1, and then whatever the answer was coming, I have means That is that corresponding to the distance between line 2 and line 1, correct? yes, sir. Then next step. Next, then I have found out the distance of 1.54. I have put the values 1.54 and 1 in that again, in that log. Yes, sir. And whatever the answer was coming, I have found means the answer was coming 0.3 something for this distance. It was 0.8 centimeter. This is 0.8 centimeter. So From it was what? equal Your basis is 1 or 2? 1, sir. हाँ तो 1 से ऊपर जाना है ना. Yes, sir. If 1 to 2 distance, let's say, is 1 centimeter, and Yes, for sir. your 1.54 it is 0.8, as you are saying. Yes, sir. So 1 से ऊपर 0.8, आपका 1 से ऊपर बहुत ही छोटा दिखता है. Yes, yes, sir. I'll do it again. Yes, आप 2 से नीचे आए हो. yes, sir. Yes, sir. So that is the mistake. That's why I told you, you tell me the procedure, then I will find out that mistake. Yes, sir. So you have done the calculations correct, but your basis for the distance is not 2, it is 1. So Yes, you have sir. to move from 1 in the upward direction. Yes, sir. Clear the doubt? Yes, sir. Anyone else having any doubt?
हो गई second line. Wet compression. हाँ सर, सर आई एम एक्चुअली टेकिंग द फोटो राइट नाउ. लाइन हो Okay. गया एंड आई plotted the enthalpy also I plotted. Okay. Hello sir, Yes. share करो. Oh. हाँ. So 2 Yes. dash and 1 dash. Let us This call line over. point 1 as 1D, 1 dry, and 2 dry, and the left hand side as 1W, 1 wet, and 2 wet. Okay. So now you calculate the COP. 1 wet minus H1 wet minus H4 divided by H2 wet minus H1 wet. So values. 354, So 350, and over here 381 and 379. How come the difference between 1 dash is more than 2 dash? so The slopes have to get expanded. Means the distance has to be enlarged. So distance between 1 dash has to be lower but side. And entropy, 2 sir, dash, but entropy distance is also expanding na, as we go up between the entropy entropy distance curves. means what? So it means over here, so means if you see these 0.7 and 0.8, these are small, sorry, 1.4, 1.5, these curves of entropy are smaller, and as we go towards the upper side, they are expanding and getting bigger. So that's why I'm getting a difference also. Hey, wait. Repeat. So actually, so means I'm saying that there of means there are not of same size. Means as we go upwards, means even if we keep a bit of ratio, so there is error to happen. Means error might happen like that. If you observe the isentropic lines, they are all of having the same interval, correct?
1.5, 1.55, 1.6, 1.65. No, sir, but 1.7, this the 1.75. distance over here and distance over here is different. So that is why you have to take that ratio, na? Sir, How you your are- enthalpy difference would be lower on upper So side that's and higher on lower so side. actually I also wanted to ask you the same thing, because while I was plotting I found means I got these points, so I just screenshot over here right now. So I actually wanted to ask you that only, because I am getting 4 over here, so it should be more over this side, like it should be about 6 or 8, the difference. Your difference in state 2 is like 381 minus 379, only 2 units. And for 0.1 and 1 dash, it is 4 units. 354 Yeah, so minus that's what I also wanted to ask. So there might be error while plotting, or But do you rather believe, calculating. exactly, do you believe that the slope of line 1 wet to 2 wet and 1 dry to 2 dry, those are different? Correct? So they have to be different. Yes, sir. Exactly. So if you follow the actual technical method and try to plot the points 2 wet and 2 dry with proper technique, so then the distance has to be greater, no? How come your 1 dash is having difference of 4 units and 2 dash a lesser value? That's what I'm also trying to see. Just a minute, let me check. जैसे कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया है सर, क्योंकि इस फिगर में बराबर दिख रहा है, Calculational error means? उसने वैल्यूज गलत लिख दिया रहेगा ऐसा कुछ, because in the figure it is visible that 2 dash is greater than 1 dash is lower than 2 dash. It seems like that. Then how the values are like this, whatever it is. सर थोड़ा उससे निकालने वैल्यू रॉन्ग वाला असेल त्याचा. Siddesh, you yourself can see now. Yeah, 1 yeah, and so 1 sir, dash I'm checking distance that is only. lesser than 2 dash. So you cross check the values of 2 and 2 dash. So yes, I'm cross checking value. Just a minute. Or 1 dash, whatever. या तो वो 354 350 नहीं होगा. Achha, by the way, because you are closing, we are coming close to the end of the session. So this will complete both the cycles. Then you have to calculate COP or dry saturated compression part, then wet compression part, and then cross check whatever are your values. Experimental values. Is it falling in between or on the still lower side or on the higher side? So it may be even further wet compression, or maybe between wet and dry, or maybe even superheated also. Okay, so that will complete our experiment, and in the next session, next means Monday, lab session. Sir, difference of 8. There is a difference of 8. Where? Sir, 2 dash is 373. 2 is correct, 381. This is 373. 373, huh? Because here it is 4 difference, 4 units. So naturally something higher has to be there. Okay. So what I was telling you have to find out for the COP of dry compression, COP of wet compression, then your own experimental value of COP, then predict what type of compression it is, and then we will finalize for the conclusion in Monday's lab session. Coming Monday, I will engage the lab session so that your entire experiment will be complete. Wednesday is reserved for mechatronics, right? Yes, sir. So Monday lecture, I will complete with the entire discussion, conclusion, everything. So by Monday, I would like to see for all 3 batches to complete with all the calculations and show me the graphs. Is it fine? Yes, sir. I don't think there should be any problem as such. Everyone has to just take the print, and anyone from the batch can show it. I cannot check it for all 72 people, but anyone from one batch. So I want only 3 parts, 3 graphs. Reading 1, reading 2, reading 3. And then you have to tell me about the COP. Dry ka kitna, wet ka kitna, actual kitna. Because in your
what you call it, conclusion, means not conclusion, result sheet. We have to summarize for all 3 readings. Indirectly, we are building that result table only. Observation table मैंने दे दिया. Now we have to compile the result table. Okay. So we have to make basically 2 graphs, right? One for saturated 0.2 and one is for एक ही saturated. इसमें. But This is the 2 same thing. What cycles, Siddesh right? had done. Basically, Huh? one graph but 2 cycles, right? One graph, 2 cycles, yes, in the same graph. Then only we can compare, na? How it gets deviated. जैसे अभी यहाँ पे देख के पता चला 1 1 dash and 2 2 dash. So we'll give the name 1D 2D and 1W 2W, wet compression and dry setting. Okay. So let's meet on Monday with the graphs and the calculations done, so that we can compile the result table, finalize the conclusion, and then I will share the write-up so that within 2 or 3 days you can submit entire thing. That is your submission. Okay, sir. Fine. Okay. So Yes. Siddesh, you can stop sharing the screen, Thank you, sir. and then I will end the meeting. Bye, sir. Anyone having any doubt?